Hello and welcome, dear viewers. I, Prithvi Parmar, welcome you all to yet another interesting video presentation. Today, we will be talking about the first line of defense of your financial plan, that is health insurance. In this corona pandemic crisis, the importance of having a mediclaim has grown to another level. आजकल कोरोना के वजह से हेल्थ इंश्योरेंस एक बहुत ही पॉपुलर और हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गया है। बहुत लोग इंश्योरेंस इस सब्जेक्ट में सीरियस हो गए हैं और लोगों को नेसेसिटी ऑफ इंश्योरेंस समझ में आने लग गया है, लेकिन इसकी प्रॉपर जानकारी मिल नहीं पा रही है। इसीलिए हमारी इस वीडियो में यह कोशिश रहेगी कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। द लेंथ ऑफ द वीडियो इज़ a little long, but the information in it is very necessary for you to know. Let us begin with the biggest question of the hour. क्या मेरे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कोरोना कवर होगा? The answer is yes. Your existing health insurance policy will absolutely cover claims related to coronavirus hospitalizations. Although if you have recently bought a policy, there will be a 30 days waiting period for the same. On 4th March 2020, the regulatory body of India, that is IRDA, came up with a guideline stating that health insurance companies will have to settle claims related to COVID-19 hospitalizations on priority. As the whole world is fighting coronavirus and is in the league of finding a vaccine at the earliest, you must have also heard theories saying that sooner or later we will have to live along with coronavirus like any other viruses. And if this turns true, we will need two things: a good immune system for our body and enough health insurance cover to come out of this illness without a financial loss. For the second bit, let me tell you that medical inflation in India is at 15%. And to support that, here is a very shocking and eye-opening real-life incident in front of you. One day bill of a COVID-19 patient admitted in a very renowned hospital in Mumbai. Yes, the one day bill is 4,43,918. अगर आप अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सीरियस नहीं है तो शायद ये बिल ने आपको सोचने में ज़रूर मजबूर किया होगा। Who should benefit out of this video? इस वीडियो को 3 टाइप के लोगों ने देखना चाहिए। नंबर 1, जिनके पास ऑलरेडी अपना खुद का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। नंबर 2, जिनका हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी स्पॉन्सर्ड है, यानी कि वो लोग जो अपने कॉरपोरेट ग्रुप इंश्योरेंस पे डिपेंडेंट है। एंड नंबर 3, जिनके पास कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ही नहीं है। सो पीपल हु ऑलरेडी हैव अ मेडिक्लेम कवर from a private health insurance company should check first the coverage amount you have is sufficient or not. मेडिकल इन्फ्लेशन और बढ़ती महंगाई जिसके बारे में हमने पहले बात की, सिर्फ 2 या 3 लाख का कवरेज शायद आपको कम पड़ सकता है। चेक इफ द फीचर्स ऑफ योर पॉलिसी आर अप टू डेट एंड इन लेवल टू द पॉलिसीज प्रोवाइडेड बाय अदर हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स एट डिसेंट कॉस्ट्स. Make sure there is no sublimit and no capping. Check if your policy has cashless facility in the hospital near to your residence. Cashless facility आपको सिर्फ एक डिपॉजिट फी भर के हॉस्पिटलाइज होने में मदद करती है. Now, coming on to people who have high dependency on the corporate group health insurance provided by their employer. First thing you need to check is if your whole family is covered or not. अगर आपके फैमिली के मेंबर्स आपके ऊपर फिनेंशियली डिपेंडेंट है तो सारे मेंबर्स इस पॉलिसी में कवर्ड होने चाहिए. अगर कवर्ड है तो कवरेज अमाउंट सबको काम आ सके उतना सफिशिएंट होना चाहिए. आप सब ये जान गए होंगे कि ऐसे क्राइसिस के वजह से जॉब्स कितने अनसर्टेन हो गए हैं. इफ़ यू लूज योर जॉब ड्यू टू सच एम्प्लॉय एट्रिशन इन पेंडेमिक टाइम्स, your health cover is wiped off overnight along with your job. As you all must have faced, a lot of companies are cutting down salaries of their employees due to no revenue generation. It won't take time
for them to cut loose your health cover or reduce the coverage amount to control the company's expenses. Finally, a corporate health insurance plan will almost never last beyond your retirement, even if you are covered with these plans throughout your working life. To start a health insurance plan at age of 60 is never a good idea, because in addition to struggles of finding a health insurer who will accept your case, you have to deal with waiting periods, permanent exclusions on any pre-existing illness you might have, and heavy co-payments and sublimits on certain procedures. Next, it is most important for this set of people to watch the video, those who do not have insurance at all. And if you have not thought of having an insurance yet, now is a good opportunity to take an informed decision. It is very easy to buy an insurance when you are fit, but health issues are very uncertain. Once you get hospitalized because of any lifelong illness or are even diagnosed for the same, you won't be able to undo your decision of delaying to buy an insurance. Health insurance is a thing to be bought when not needed, because when you need it, you won't be able to buy it. अगर आपने इंश्योरेंस को इग्नोर करके हमेशा सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया है, तो इस गलती के वजह से आपकी लाइफ की सारी सेविंग्स वाइप ऑफ हो सकती है। इन्वेस्टमेंट्स को तोड़कर ही आपको आपके मेडिकल नीड्स पूरे करने पड़ सकते हैं। आपके रिटायरमेंट और चिल्ड्रन एजुकेशन जैसे फाइनेंशियल गोल्स एक अनएक्सपेक्टेड हॉस्पिटलाइजेशन के वजह से अधूरे रह सकते हैं। अगर आपके पास इन हॉस्पिटल बिल्स के पैसे नहीं है, then it will lead to borrowing from friends, relatives, and this can lead to long-term debts. Debts can bring stress और उधारी का स्ट्रेस दूसरी बीमारियों का कारण बन सकता है। अगर इस स्लाइड से आपको इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी के बारे में अवेयरनेस हुई है, तो आगे आपको ये वीडियो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करेगा। As important it is to check the features before buying the policy, it is equally important to understand the basic conditions of health insurance plan. To begin with, a 24 hours inpatient hospitalization is must. Patient has to complete 24 hours from the time of admission to be eligible for a claim. In other words, one has to stay overnight. Although, because of technological advancement, there are some treatments that don't require 24 hours of hospitalization. In that case, these claims are payable which come under daycare procedures. 30-day waiting period. One cannot get claim in the first 30 days from the date the cover starts, except for accidents. This is not applicable when you renew your policy every year and only when it is bought for the first time. Then there are a few specific diseases that don't get claim for the first 2 years since inception of policy, like cataract, knee replacement, kidney stone removal, prostate, fissure, hernia, etc. ये ऐसी बीमारियां हैं जिसको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती। काफ़ी लोग हेल्थ इंश्योरेंस ये सोच कर लेते हैं कि वो लेते ही पहले साल में उसे यूज़ करके बंद कर सके। ऐसा ना हो, इसीलिए ये 2 year वेटिंग पीरियड्स रखे गए हैं। प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन. इफ अ पर्सन बाइंग अ हेल्थ प्लान हैज कंडीशंस लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा, hospitalization related to such conditions will have a waiting period of 2, 3 or 4 years depending on the type of policy. This is one of the main reasons why it is insisted to buy a policy in the early age when one doesn't have these conditions. You will easily get a policy without having to go under any pre-medical checkup. Buying a policy with health problems can also lead to loading in premiums. Loading simply means paying an extra premium on top of the normal premium. It can be as high as 15 to 20% for each health issue. Also, these loadings stay forever as long as you keep renewing your policy. Next is
permanent exclusions, expenses that can never be claimed and are not covered in health plan. These consist of two types: non-medical exclusions and medical exclusions. Non-medical exclusions means that if you get hospitalized while doing these heinous acts like a crime of trying to kill someone, robbery, breaking of any laws, trying to injure own self intentionally, or performing dangerous acts that it can cost your and others' life, you will not get a claim settlement. Coming to medical exclusions like cosmetic surgery to get rid of your body fat or fixing your nose or LASIK eye surgeries are not payable. Claims related to HIV, mental disorder, psychiatric treatment, dental treatment, pregnancy expenses are also not covered. Next, non-payable items. It usually consists of consumables or materials used in surgeries and treatments. Items like hand gloves, masks, band-aids, toiletries, caps, syringes, PPE kits, or other dressing charges are non-payable. The list of non-payable items is declared under norms by IRDA. After speaking about importance, features, conditions, benefits of a health insurance, and except for knowing all of these, there are some duties even you should follow as a buyer. Your first duty is 100% डिस्क्लोजर. ये आपकी ड्यूटी है कि आप आपके हेल्थ रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स इंश्योरेंस लेते समय पूरी तरह से डिक्लेयर करें. एग्जिस्टिंग इश्यूज, लाइफस्टाइल, हैबिट्स लाइक स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, ये सारी चीज़ें मेंशन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ये ना डिक्लेयर करने से शायद आपको पॉलिसी लेते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट क्लेम्स के वक्त पैसे ना मिलने का सबसे बड़ा कारण बन सकता है. योर सेकेंड ड्यूटी इज टू सिलेक्ट द राइट प्लान. आज मार्केट में आपके अलग अलग ज़रूरतों के लिए कई प्रकार के प्लान्स अवेलेबल है. इंडिविजुअल प्लान्स, फ्लोटर प्लान्स, ओपीडी कवर प्लान्स, कैंसर केयर, डायबिटीज स्पेशल, हार्ट कंडीशन केयर, सीनियर सिटीजन केयर, मैटरनिटी बेनिफिट, प्लान्स विथ हेल्थ चेकअप एंड मैनी मोर. ये सारे प्लान्स को कंपेयर करके, इनके फीचर्स को कंपेयर करके, इनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के आपको आपके लिए सूटेबल होगा ऐसा प्लान सिलेक्ट करना है. और अगर आपको लगता है कि ये एनालिसिस डिफ़िकल्ट है और आप नहीं कर सकते, तो ये नेक्स्ट ड्यूटी आपके लिए है. सिलेक्ट द राइट एडवाइज़र. एज एन इंडिविजुअल आपको सिलेक्शन ऑफ प्लान से ज़्यादा इम्पोर्टेंस सिलेक्शन ऑफ एडवाइज़र पे देना चाहिए. इसमें आप आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक्सपर्ट को ट्रांसफ़र कर देते हैं. इसके बाद आपकी यही ड्यूटी रह जाती है चेक करना उस एडवाइज़र की कैपेबिलिटी टू केटर टू योर नीड्स. नाउ हु इज़ अ राइट एडवाइज़र? एन एक्सपर्ट एडवाइज़र is one who has variety of products to offer according to your suitability. He should be having a detailed study of various plans of different companies to compare them and give you a solution of what is best needed to you. A right advisor is one who updates you with all the changes and reforms coming from the regulatory body of insurance. Last, the most important of all duties is the advisor's potential to settle claims. Intent of handling claims with expertise is the most crucial capability needed in a right advisor. Only a right advisor can make your insurance experience and journey hassle-free and can help you protect your wealth from medical emergencies. आजकल जो इंश्योरेंस से डिससेटिस्फाइड स्टोरीज सुनने में आती है वो राइट एडवाइज़र या राइट प्रोडक्ट ना चूज़ करने के वजह से आ रही है. अ राइट एडवाइज़र विल टेक यू टू अ राइट प्रोडक्ट. सो व्हाट शुड यू चूज़? हेल्थ इंश्योरेंस प्लान बाय योर सेल्फ और एन एक्सपर्ट एडवाइज़र? If you need such all-round insurance protection and help in selecting the best plan for your need or have any questions, please contact us via the details mentioned on the screen. This topic is like an ocean
and there are endless details to discuss for more clarity. Don't forget to share this video with friends, families, and loved ones. It may come to their help. Stay safe and take great care of your health so that you never need to use your health insurance. Thank you for watching this video. Have a good day.